Our next exercise is exercise 3.4. The first question is solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method. Substitution method से किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम नया मेथड सीखेंगे दैट इज एलिमिनेशन। by elimination method how we solve linear equations, that is the concept of exercise 3.4. So let's start with our first part, that is x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. These are the two given linear equations. So the concept of this exercise is elimination method. अब ये जो concept है मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही क्लैरिफाई करता हूँ. First part is x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. These are the two equations. Elimination method का जो first step होता है वो ये होता है x या y में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको सेव करना होता है. जैसे यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है 2. If I decide to equal the coefficient of x variable, then what I will do, I will multiply the equation 1 by 2. Because by multiplying equation 1 by 2, what I will get, equation 1 will be 2 into x, that is 2x, plus 2 into y plus 2y equal to 5 into 2, that is 7. Now equation 1 becomes 2x plus 2y equal to 10. You can see that variable of x is 2, again variable of x is 2. This is the first step of elimination method. What we have to do to equate the coefficient of x or y variable. x और y में से किसी भी एक वेरिएबल को हमें इक्वल करना होता है. ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई. व्हाट वी विल गेट by multiplying equation 1 by 2, 2 into x, that is 2x, 2 into y, that is 2y, equal to 2 into 5, that is 10. And this is equation number 3. Equation 2 by 1, अगर मैं equation 2 को 1 से multiply करता हूँ, it will be 1 into 2x, that is 2x, 1 into minus 3y, 1 into 4, that is 2. Then minus, plus and minus. 3y plus 2y, that is 5y. 10 minus 4, that is 6. So y, value of y will be equal to 6 by 5. By getting the value of y equal to 6 by 5, putting the value of y in equation 1. So equation 1 है हमारी, that is x plus y equal to 5. Equation 1 is x plus y equal to 5. Now in place of a y, we will put 6 by 5. In place of a y, we will put 6 by 5. What we will have? X plus 6 by 5 equal to 5. We will get x equal to 5 by 1 minus 6 by 5. LCM of 1 and 5 is 5. 5 5 are 25 minus 1 6 are 6. X will be equal to 25 minus 6, that is 19 by 5. We have got our solution. X is equal to 19 by 5 and y is equal to 6 by 5. Okay, let's move to the next part of this question. That is part 2. Part 2 is 3x plus 4y equal to 10. This is the first equation. And 2x minus 2y equal to 2. This is the second equation. So first of all, what we have to do? Either we have to equate x variable or y variable. Now you can see that if I multiply equation 2 by 2, if I multiply equation 2 by 2, it will be 2 to the 4. In this case, variable of y will be same.
आपकी मर्जी है, आप एक्स के वेरिएबल सेम करना चाहते हो या वाई के। प्रीवियस पार्ट में मैंने एक्स के वेरिएबल को सेम करके दिखाया था, इस पार्ट में मैं आपको वाई का वेरिएबल सेम करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। सॉल्विंग 1 and 2, now what we will have 3x plus 4y equal to 10 and 2 to the 4x minus 2 to the 4y equal to 2 to the 4. You can see that variable of y's are equal. अब देखो साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो रहा है। अगर ये साइन अपोजिट ना होते, जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट में था, अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो तो जो आपके साइन है वो जो आपका सेम वेरिएबल था जिसको आपने इक्वल किया था उसका साइन सेम नहीं था, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं, तो साइन फिर उसी वेरिएबल का चेंज नहीं होगा, उस इक्वेशन में जितने भी आपकी टर्म्स है सभी का साइन चेंज होता है। लाइक ये प्लस है ये माइनस हो गया तो ये माइनस का क्या होगा प्लस और प्लस का क्या होगा माइनस। बट अगर आप पार्ट 2 में देखो तो जिस वेरिएबल को आपने सेम किया, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपने सेम किया है, फोर वाई एंड फोर वाई विल बी कैंसिल आउट, 4x plus 3x will be 7x and 10 plus 4 equal to 14. So what we will have, x will be equal to 14 by 7, that is 7 to the 14. Putting the value of x is equal to 2 in equation 1. And our equation 1 is 3x plus 4y equal to 10. Our equation 1 is 3x plus 4y equal to 10. So in place of a x, we will 2. So what we will have, 3 into 2 plus 4y equal to 10. 3 to the 6 plus 4y equal to 10. It will be 4y equal to 10 minus 6. So 4y equal to 4 and y is equal to 1. So finally our answer is x equal to 2 and y is equal to 1. This is the answer of this part. Let's move to our next part. That is part 3rd. Part 3rd is, first equation is 3x minus 4y minus 4 equal to 0. And second equation is 9x equal to 2y plus 7. Three x minus 5y minus 4 equal to 0. Second equation is 9x. It can be written as 9x minus 2y minus 7 equal to 0. 9x minus 2y minus 7 equal to 0. This is the second equation. Now first step is either equating the coefficient of x or y. What we have to do to make equal coefficient of x or coefficient of y. Now in this part, what I'm doing, I'm equating or I'm making equal the coefficient of x variable. जो x variable है उसका coefficient को मैं equal कर रहा हूँ. How? I'm multiplying equation 1 by 3. तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो x वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट आपके इक्वल हो जाए. लाइक 3 3 जा 9x minus 3 5 जा 15y minus 4 3 जा 12 equal to 0. The second equation remains same, that is 9x minus 2y minus 7 equal to 0. अब देखो जो x वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट सेम है, बट एट द सेम टाइम दोनों का जो साइन है वो पॉजिटिव है. पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल नहीं होगा, तो साइन आपको चेंज करना होगा. जब आप साइन चेंज करोगे तो जो भी सेकंड इक्वेशन के टर्म्स हैं उन सभी का साइन चेंज होगा. ये प्लस है ये माइनस हो गया तो ये माइनस का क्या होगा प्लस और ये भी माइनस का प्लस. नाउ 9x and 9x will be cancelled out. 15y plus 2y
माइनस 15y प्लस 2y दैट इज माइनस 13y बिकॉज प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 12 प्लस 7 दैट इज माइनस 5 इक्वल टू 0. Minus 13y equal to 5, so y will be equal to minus 5 by 13. Now putting the value of y in equation 2. Equation 2 is 9x minus 2y minus 7 equal to 0. Putting the value of y equal to minus 5 by 13 in this equation. In place of a y, we will put minus 5 by 13. That is 9x minus 2. In place of a y, minus 5 by 13. Minus 7 equal to 0. It will be 9x minus minus, that is plus 5 to the 10 by 13 minus 7 equal to 0. 9x equal to minus 7, when move to the right hand side it will be 7 minus 10 by 13, which implies 9x is equal to LCM कितना होगा आपका 13, 13 7 the 91 minus 10. 9x will be equal to 91 minus 10, that is 81 by 13. So x will be equal to 81 by 13 into 9. 9 9 is 81, value of x will be 9 by 13. And value of y, which we have already computed, that is minus 5 by 13. So this is the answer of this part. Let's move to our next part. That is part 4. Part 4 is x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1 and x minus y by 3 equal to 3. X by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1. First of all, by simplifying this equation, what we will have? 2 3 is 6, 6 will be the LCM. 2 3 is 6, that is 3 into x, 3x plus 2 to the 4y equal to minus 1. 3x plus 4y equal to minus 6. This is equation number 1. Similarly, in this equation, by taking LCM, which will be equal to 3, 3 into x, that is 3x, 1 into minus y equal to 3. 3x minus y equal to 3, 3 is 9. That is equation number 2. Now by solving first and second equation, you can see that here coefficient of x are equal. यहाँ ऑलरेडी आपके जो x के कोफिशिएंट है वो इक्वल है, तो आपको इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है. We don't need to equalize the coefficient of any variable because we already have coefficient of x equal. Now the second step is they should have opposite sign. Now here equation first 3x and equation to 3x both are positive. What we need to do now? Change the sign of second equation term. First term is positive, it becomes negative. Second term is negative, it will become positive. Positive, it will become negative. These two terms will be cancelled out. 4y plus y, that is 5y, minus 6 minus 9, that is minus 15. Y will be equal to minus 15 by 5, that is minus 3. That is minus 3. Now putting the value of y in equation 2. Putting the value of y in equation 2. Equation 2 is 3x minus y equal to 9. In place of a y, we will to put minus 3. 3x minus, in place of a y, minus 3 equal to 9. 3x minus, minus 3 equal to 9. Minus minus plus 3 equal to 9. 3x will be equal to 9 minus 3, that is 6. So x will be equal to 6 by 3, that is 2. So x is equal to 2 and y is equal to minus 3. That question is question number 2.
फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये आपको प्रॉब्लम्स गिवन है, इसको यूज करके, स्टेटमेंट को यूज करके आपको लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। फिर जो वो इक्वेशंस बनेंगी उनके आपको सॉल्यूशन फाइंड करना अगर एग्जिस्ट करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन in which a1 by a2 is not equal to b1 by b2, उन्हीं केसेस को हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फॉर दैट मैटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। The first part is if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। भाई अभी तक हमने क्या स्टडी किया होगा, कोई भी जो फ्रैक्शन होती है वो किस फॉर्म में होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। Let our original fraction be n by t. According to the question, if we add 1 to the numerator, that is n plus 1, and subtract 1 from the denominator, that is b minus 1, a fraction reduces to 1. तो जो हमारा fraction है, it will be equal to 1. You can say that 1 by 1. इसको solve करके हमें first equation मिली। Then if we only add 1 to the denominator, numerator will remain as it is. But if we add 1 to the denominator, only add 1 to the denominator, this fraction will be reduces to, it will become 1 by 2. From this condition, we will get our second equation. We have to find what is the fraction. That is, we have to find n by d value. Okay. Now, how will we represent the question? First of all, let numerator be equal to n. Let numerator be equal to sorry. Let numerator be equal to n and denominator be equal to d. Then our fraction will be equal to n by t. Right? Case 1 में क्या given है? अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन जो होगा इट विल बी इक्वल टू 1। द फ्रैक्शन विल बी reduces to 1 as we discussed earlier. You can say that n plus 1 will be equal to d minus 1 into 1, that is d minus 2. n plus 1 minus d plus 1 equal to 0. n minus d, 1 plus 1 plus 2 equal to 0. This is the first equation. Case 2 क्या है? If we only add 1 to the denominator, सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं and the fraction will become 1 by 2. Again cross multiply n into 2, 2n, यहाँ भी cross multiply हुआ, n plus 1 into 1, n plus 1 and d minus 1 into 1, d minus 2 into n, 2n, d plus 1 into 1, that is d plus 1, 2n minus d minus 1 equal to 0. Now we need to simplify these two equations. So our first equation is n minus d plus 2 equal to 0. Second equation is 2n minus d minus 1 equal to 0. Minus plus plus. तो यहाँ आप देखो d का कोफिशिएंट सेम है -1 बट साइन भी सेम है, साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर साइन अपोजिट नहीं होता है तो सेकंड इक्वेशन में हम सभी टर्म्स का साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब क्या हुआ, ये प्लस माइनस हो गया जिससे ये कैंसिल हो जाए। -2n plus n will be -n, 2 plus 1 that is +3 equal to 0. So -n -3, so n will be equal to 3. Putting the value of n, this equation 1. Equation 1 is n. Equation 1 is n minus d plus 2 equal to 0. So by putting in equation 1, what we will have, in place of n we will put 3. That is 3 minus d plus 2 equal to 0. 3 plus 2, that is 5 minus d equal to 0. Now minus d is equal to -5. So d will be equal to 5. D will be equal to 5.
So numerator is 3, denominator is 5. So our fraction will be equal to 3 by 5. Our fraction will be equal to 3 by 5. So we have completed question number 1 in today's class and question number 2 first part. On the next class, we will proceed with the remaining question of remaining parts of question number 2 of exercise 3.1.